हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारा EDS का चौथा लेक्चर है MCQS पे, जिसमें हम आज क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे और क्लाइमेट चेंज के जो MCQS हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट वेरिएशंस ऑन द स्केल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर में बी कास्ड बाय चेंजेस इन करंट ओशन करंट्स। ये दूसरा सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन लॉक्ड अप ओवर जियोलॉजिकल टाइम एज लाइमस्टोन एंड फॉसिल्स। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ अर्ली ग्रीन हाउस क्लाइमेट रिजल्टेड इन अ क्लाइमेट मच लाइक दैट ऑफ डैश टुडे वीनस। इसका ये वीनस है। विच वन रिफर्स टू द ओशंस, सीज, रिवर्स, फ्रेश वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर? हाइड्रोस्फीयर। Which of the following gases are included in the category greenhouse gases? All of these. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और मीथेन भी होता है। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर occurs between two substances in direct physical contact? तो इसका जी ये कंडक्शन आ गया। Which two gases make up 99% of Earth atmosphere? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें। Which is the most abundant greenhouse gas in Earth atmosphere? Water vapor. Which greenhouse gas is produced only through human activity and no natural sources? Hollow carbons. Which is not an example of electromagnetic radiations? Albedo. Which type of energy transfer occurs as energy travels from the sun to earth? Radiation होता है जी। Which is the largest single indicator of climate change? Global warming. Which activity in developing countries may be a major contributor to global climate change? Automobiles. The greenhouse effect is caused by greenhouse gases in the lower atmosphere absorbing radiations from the Earth's surface and preventing much of it escaping into space. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा। What greenhouse gas was not present in the atmosphere in pre-industrial time? Chlorofluorocarbon. Which of these countries has the highest per capita carbon dioxide emission? US. United States, इसको US भी कहते हैं। Which of the following activities contributes the most to carbon emissions globally? Transport. When did Kyoto Protocol entered into force? 2005 में जी ये जापान में शुरू हुआ था। Which of the following is not a Kyoto flexibility mechanism? Adoption mechanism. ये बाकी तीनों हैं इसमें। This mechanism allows developed countries to mitigate their emissions through other developed countries. Joint implementation. Which mechanism allows countries to earn certified emission reduction CER units? इसको ये emission trading कहते हैं।
Countries in which region have achieved maximum emission reductions compared to the 1990 level. Europe. Which gas was added to the list of GHG under the protocol in the second commitment period? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF क्यूब जिसको कहते हैं, 3 भी कहते हैं, क्यूब भी कहते हैं. The time gap between the adoption of Kyoto Protocol and entry into force occurred due to the following reasons. The document was not ratified by sufficient number of countries. Which of the following was not achieved by Kyoto Protocol first commitment period? Decrease in global emissions by 5% compared to 1990 levels. The Montreal Protocol 1987 was established to deal with the depletion of ozone layer. ये भी सवाल बड़ा अहम है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था और उसको क्यों बनाया गया था? ओजोन लेयर की डेप्लीशन के लिए. Which key player pulled out the Kyoto Protocol in 2011, thereby undermining its legitimacy? Canada. In its 2013 report, the IPCC projected the average increase in global temperature about 2.7 Fahrenheit under short bracket 1.5 Celsius centigrade भी उसको होता है. Is ozone good or bad for humans? Both B and C. Good भी है और bad भी है. Montreal Protocol goal is to phase out ozone depleting substances.